as it's with you, as long as it's with you. गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू डे। एंड आज हम जाने वाले हैं बहुत सारी जगह। फ़िलहाल आपने अभी तक देखा शांति स्तूपा एंड ले पैलेस, एंड आगे जाके और भी मस्त मस्त जगह देखेंगे अपन। स्टे ट्यून्ड, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस व्लॉग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इंस्टाग्राम पे जाके मैंने कुछ अमेजिंग रील शूट करी है, तो उसके लिए कनेक्ट कर लो, तो वो भी देखने को मिलेगा। So we are here for breakfast and we have some great things. Some pakoras, bread, some parathas and bread jam and some nice fruits. Let's take it and then we'll... So this is my plate. I took some watermelon, some parathas and jam bread and of course tea. Some amazing views while eating. Careful with your pretty eyes and run with me, you're done. 'Cause you and I are a secret. So breakfast done, right? Fruits खाए, चाय पी, ऑमलेट खाया, पराठा खाया, सब थोड़ा थोड़ा लिया, इतना ज़्यादा नहीं खाते, बट हाँ, इट वॉज अ गुड हेल्दी ब्रेकफास्ट. सो अब उसके बाद आई विल गो एंड गेट रेडी एंड देन विल लीव फॉर आर टुडेस डे ऑफ एडवेंचर. स्टे ट्यून्ड. Hello, I am all set to go and I am ready and just looking outside and walking down near the hotel to see the view here. चलो चलते हैं आगे एंड आपको दिखाते हैं कुछ ब्यूटीफुल लेके रोड्स एंड जहाँ हम we will be going to 2 monasteries and first I'll show you 2 of the monasteries and the biggest that huge statue of the Buddha. It's amazing. I am very eager देखने कि कैसा होगा. And after that I will show you the Indus and Zanskar river Sangam. So stay tuned to this vlog and keep watching and share with your friends and family who are traveling or would like to just see the amazing view of Ladakh. Feel my drift against your skin. 'Cause honestly, let's hold our breath. This is so real. Just you and me, let's escape, girl, tonight. So we are at our first location, which is the Gurudwara here on the way to the Alchi Monestry. So see क्या beautiful view है. तो अभी देखते हैं, अंदर जाते हैं and आपको बाकी का दिखाती हूँ. So हमने गुरुद्वारा देखा, इतना ब्यूटीफुल था, इतना पीसफुल था. अभी वन थिंग मैं सबको सजेस्ट करूँगी, जहाँ पर बैनर्स लगे रहते हैं कि नो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी, प्लीज़ रिस्पेक्ट इट. किसी वजह से होते हैं, देर आर सम सिक्योरिटी इन एवरीथिंग. सो अंदर अलाउड नहीं था, तो वी रिस्पेक्टेड दैट एंड हमने वही चीज़ करी. सो अभी मैं बाहर आके थोड़ा साइड में, जहाँ पर देर शुड बी नो प्रॉब्लम्स और नो रेस्ट्रिक्शंस, वहाँ पर आके आई एम शूटिंग दिस. सो अमेजिंग, इट इज़ सो पीसफुल, वर्थ इट एंड डेफिनेटली गिव अ विज़िट. मतलब इतना ब्यूटिफुली दे गेव अस अ स्कार्फ एट ऑरेंज वाला. फिर हम अंदर गए, वी वॉश्ड आवर हैंड्स. देयर वाज अ बीच में ऐसा पानी जैसा बना हुआ था, एक ऐसा छोटा सा, वहाँ पर योर लेग्स आर वॉश्ड एंड देन यू गो फर्दर. इतना ब्यूटिफुल, आर्मी ने इतना अच्छे से इसको मेंटेन करा हुआ है. डेफिनेटली विज़िट. लेट्स हेड अप टू आवर नेक्स्ट लोकेशन. स्टे ट्यून्ड. We are at magnetichill right now एंड अभी आपने जो छोटी सी क्लिप देखी, गाड़ी बंद थी एंड इट वाज ऑल मूविंग अपने आप न्यूट्रल पे. सो दैट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी यू कैन फील. आई डोंट नो हाउ मच ट्रू इट इज़, बट या वी फेल्ट इट. सो प्रिटी गुड. लेट्स क्लिक सम फोटोज एंड देन हेड टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन.
the view from here. This is the point. People are also doing ATV rides. So this is the board which has all the information. Careful with your pretty eyes and run with me, yeah. Cause you and I are a secret. So we are at our next location, the Indus and Zanskar river Sangam. बहुत unrealistic view है. I'm falling in love with it. See, कितना beautiful लग रहा है. And on the top of it, the mountains. Feel my drift against your skin. Cause honestly, let's hold our breath. This is so real. Just you and me with escape, girl, tonight. Careful with your pretty eyes and run with me, yeah. Cause you and I are a secret. Feel my drift against your skin. Cause honestly, let's hold our breath. This is so real. Just you and me, let's escape, girl, tonight. So हम अभी इंडस और संगम देखने के बाद वी आर ऑन लेकर मॉनेस्ट्री. सो यहाँ पर इतना ब्यूटीफुल व्यू है एंड मेरे पीछे बुद्धा का बड़ा सा स्टैचू. उसके पास अभी हम जाएंगे, आपको व्यू पूरा दिखाएंगे. टिल देन वॉच दिस. तो अभी आराम से ऊपर जाएं. अगर कभी भी ऐसा कुछ भी फील हो व्हेन यू आर ऑन अ हाइट, डेफिनेटली अगर दवाई ववाई है, इफ़ यू हैव टेकन गुड, इफ़ नॉट कपूर लेके साथ में घूमो, इट्स गुड. Escape, girl, tonight. In your head. Way to the statue. Oh, this is massive. Wow. Let me show you. This is the massive statue of the Buddha. Let me go closer and show you. Finally statue के पास आ चुके हैं and as I shown you, you have seen the statue. See, it's there.
I met another friend and he is here to bless us. Smiling, just sitting below the statue. So cute. Careful with your pretty eyes and run with me. Yeah. 'Cause you and I are a secret. Feel my drift against your skin. तो हम अभी आ चुके हैं आर्ची मोनेस्ट्री. सो अभी पहले हमने डिसाइड किया कि नीचे की तरफ जाते हैं जहाँ पर इंडस व्यू का है. सो विल फर्स्ट सी दैट. उसके बाद मोनेस्ट्री के अंदर जाएंगे. पर पर्सन 100 रुपीज़ चार्जेस है. सो इफ़ यू वांट टू गो इनसाइड यू कैन गो. अगर नहीं तो सीधे इंडस रिवर का व्यू देख के एंड यू कैन गो बैक. सो अभी फ़िलहाल हम वहाँ जा रहे हैं. आपको वहाँ का ब्यूटीफुल सा व्यू मैं दिखाती हूँ. एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल सी लॉट ऑफ दीज. ओके, सो इसका एक वो होता है, इसमें लिखा रहता है यू हैव टू ऑलवेज टर्न इट क्लॉकवाइज. सो उस डायरेक्शन में यू शुड बी मूविंग. सो कीप इन माइंड. वैसे आपको वहाँ हर जगह नोटिस मिलेगा. तो यहाँ से आपको इंडस व्यू देखने को मिलेगा. सी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से. आई गेस वहाँ स्नो है या स्नो माउंटेन्स. यहाँ ऊपर की तरफ भी आपको सारा स्नो माउंटेन्स दिखेंगे. So amazing. This is the breathtaking view of the Indus River. मज़ा ही आ गया यार. इतनी फ्रेश एयर है. मतलब इवन इफ़ यू ब्रीथ हेयर इट सो फील्स अमेजिंग. मतलब इतना फ्रेश फील हो रहा है. इवन इन द मोनेस्ट्री व्हेन वी वेंट, तो पता है क्या हुआ कि ऑब्वियसली वहाँ पर है ना कैमराज एंड और ये सब अलाउड नहीं है. देयर इज एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट एज आई सेड. तो अब वहाँ पर है ना 3 बड़े स्टैचूज थे. मेन जो उसका मेन जहाँ से हम एंटर हुए थे. सो 13 फीट, 17 फीट एंड 13 फीट. सो ईच हैज़ डिफरेंट बिलीव्स एंड डिफरेंट उसके लिए फ्यूचर एंड लविंग एंड काइंडनेस के ऊपर. सो डिफरेंट वो थे. एंड यहाँ का व्यू इज जस्ट ऑसम. सो यहाँ जब भी आओ जस्ट क्लियर योर माइंड, फोकस ऑन एवरीथिंग गोइंग अराउंड यू, फील द फ्रेश एयर एंड ऑब्वियसली यू विल फील अमेजिंग. मुझे यहाँ का व्यू देख के बहुत मज़ा आ रहा है. लेट मी शो यू अगेन. वहाँ बर्फ़ है एंड यहाँ पर रिवर की स्मेल एंड हवा, फ्रेश एयर. And there you can see just amazing. Like करो, share करो, subscribe करो and do not forget to share with all of your friends. So अब हम आ चुके हैं खाना खाने को and I got this stupid thing. I hate it. Okay. तो ये बहुत अच्छी सी जगह है. मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा. एकदम सटल सा एम्बियंस है. लेट मी शो यू. Visiting Lay soon? टेस्टी कुछ खाना ऑर्डर करा है. पनीर बटर मसाला एंड सम रोटी बिकॉज ढंग से खाना नहीं खाया अभी तक. सो लेट्स जस्ट ईट एंड शो यू. डिलीशियस खाना आ चुका है हमारा. सी दिस रोटी, सम सब्जी and dahi. Against your skin, 'cause honestly, let's hold our breath. This is so real. Just you and me with the skate girl tonight. Beautiful view of the Indus River. On the other side we are at a bridge, so trying to record some reels. So You
stood out 'cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer high, met you in August. New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind, as long as it's with you. As long as it's with you. Last thing we are going to do is we are coming at Hall of Fame. So यहाँ पर 200 rupees adult charges हैं, Indian and foreigners 400. And if you have to take any cameras or something, video phone मोबाइल लेके जाना है कुछ ऐसा तो 20 rupees, और अगर वीडियो कैमरा लेके जाना है तो 100 rupees. The feeling behind my eyes. You stood out 'cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer high, met you in August. New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind, as long as it's with you. As long as it's with you. और मेमोरियल हॉल ऑफ फेम के अंदर आके फील प्राउड टू सी द फ्लैग फ्लाइंग लाइक दिस इन द एयर. अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आर्मी के जो वीर लोग हैं उनके बारे में पढ़ने के एंड जानने के बारे में अपने इंडिया के लिए कितना स्ट्रगल हुआ है लद्दाख स्पेसिफिकली इधर की साइड. इट फील्स अमेजिंग एंड एक प्राउड फीलिंग आती है मन से कि वाओ, मतलब दे हैव डन सो मच इवन दो वी आर नॉट लाइक, मतलब अपन ने कुछ नहीं किया बट उनको देख के फॉर आवर कंट्री it feels amazing. Hope you feel the same. We are at a tribute station. I'll show you the view. This is the beautiful view. चलो ऊपर चलते हैं. ब्लॉग को मैं यहीं एंड करते हुए है हम अभी हॉल ऑफ फेम से वापस अपने होटल जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स करके खाएं पिएंगे और आराम करेंगे बिकॉज नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ गोइंग टू बी amazing and a lot adventurous because I'm going it on my birthday, so I'm super excited about it. So इस vlog को like करना, subscribe करना मत भूलना, सबके साथ share करना and stay tuned. Bye bye.